Hello dear student, myself Sheel Sharma. Today I want to teach you a SN2 reaction. This reaction is important for IIT JEE and NEET preparation. So here at starting we are taking a nucleophile and here this is alkyl halide. An alkyl halide reaction with nucleophile. This nucleophile attack on alkyl halide. So here this bond is made and here this partially halogen group have a negatively charged, this bond making and this bond breaking. So after that this nucleophile attached on this alkyl group in backside and halogen is removed. So first of all here we want to give an idea what is nucleophile. Strong base are strong nucleophile and strong base are strong nucleophile student. So here say for example CH3S minus is strong nucleophile, OH minus is strong nucleophile, Cn minus is also a strong nucleophile. So here if we compare between these order, so this is a strong nucleophile or strong nucleophile SH minus, Cn minus, I minus, OH minus, N3 minus. These are nucleophilicity order. So here student at starting we are taking a alkyl halide. So here this alkyl halide 4 bonds are present. So what is hybridization? Hybridization is sp3. At starting nucleophile is coming on back direction. First of all in SN2 reaction please always remember that nucleophile attack on back side at alkyl halide. Reason is this, at starting this bond is making and this bond partially electronegativity created here. So here partially positive and partially negative. So negatively charged leaving group is created and here also nucleophile is coming here in this direction. So here repulsion mode, that's why nucleophile attack on back side. So at starting में स्टूडेंट here nucleophile ऐड होने लगता है और हेलोजन धीरे धीरे निकलने लगता है. तो जिस तरीके से मैं देखता हूं तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है. इसके अंदर कोई भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है. ये एक पेंटावलेंट ट्रांजिशन स्टेट होती है. तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा तो लीविंग ग्रुप से कहेगा कि भाई निकलो मैं आ रहा हूं. तो सबसे पहली कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल बहुत ही मस्त मजबूत होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा उतना ही लीविंग ग्रुप जल्दी से निकल जाएगा. तो पहली कंडीशन क्या होती है कि धीरे धीरे ये न्यूक्लियोफाइल आने लगता है तो हेलोजन से कहता है कि भाई निकलो मैं आ गया. तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनने लगती है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मेकिंग अ बॉन्ड विद कार्बन and here halogen is breaking a bond with the carbon. So in this case यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है और हेलोजन भी नेगेटिवली चार्ज है. तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा है. न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैच्ड हो रहा है और लीविंग ग्रुप धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है. तो इस तरीके से एक ये पेंटावलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है. तो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और मिथाइल ग्रुप ये इस तरीके से जो टिल्टेड हैं वो एक स्टेट इस तरीके से हो जाते हैं तो प्लेनर बन जाते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है इस बॉन्ड को बनाने के लिए. तो यहाँ से धीरे धीरे फिर हैलोजन निकल जाता है और ये एक परमानेंट बॉन्ड बन जाता है. तो इस तरीके से इसको मैं कहता हूँ. अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन तो प्लीज रिमेंबर दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. Reason is this because this molecule is in planar. That's why nucleophile easily attack on this carbon. So this is a inversion form. So name called as a Weldon name scientist. So Weldon inversion. अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अम्ब्रेला टाइप इन्वर्जन भी कहते हैं बेटा, कि ये एक अम्ब्रेला है. तो यहाँ से आप देखें तो ये अम्ब्रेला इधर विंड अगर फोर्सफुली यहाँ से आती है तो आप देखेंगे कि विंड जब फोर्सफुली आएगी तो अम्ब्रेला की पोजीशन ऐसे उड़ जाएगी. तो इस तरीके से ये अम्ब्रेला की पोजीशन ऐसे आ जाती है. तो
तो आप देखेंगे जो पॉइंट वैसे ही था, पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो H अंदर है वो H एज इट इज ही रहेगी, जो D बाहर है वो D बाहर ही रहेगा। ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये इन द प्लेन है। तो इस तरीके से मैं अगर देखता हूं तो ये बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है SN2 की। सबसे पहली कंडीशन कि ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। क्यों भाई सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है? बिकॉज अगर इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक टूवर्ड्स द कार्बन देन लीविंग ग्रुप इमीडिएटली आउट। सो दिस इज नेम कॉल्ड एज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। We have all points are discussed. Pentavalent transition state, so charge is negative. So in this case pentavalent transition state is formed. So here partially more charge. So here charge present on EWG stabilized transition state. So rate of reaction is faster. यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो अगर मैं -I ग्रुप कोई भी अच्छा ले लूँ तो उससे SN2 का रेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। -I ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जैसे NO2, CN, अगर किसी भी एल्किल हैलाइड में अगर इस टाइप के ग्रुप भी अटैच्ड हैं और वहाँ हमसे पूछता है कि बताइए किस मॉलिक्यूल का रेट फास्टर है, तो -I ग्रुप जिसमें अच्छा लगा हुआ है उसमें मैं कहूँगा कि SN2 का रेट बहुत ही अच्छा होगा। जब मैं बात करता हूं रेट की, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल। सो इन दिस केस स्टूडेंट ऑर्डर इज 2। व्हाई? बिकॉज हियर दिस वैल्यू 1 एंड दिस वैल्यू 1, देन टोटल वैल्यू इज 2, सो ऑल्सो ऑर्डर इज 2। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन नेम कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in second order. And fifth point is inversion product will be formed. So here you can see this is the inverted product. So this is Weldon inversion. So if we want to draw a potential energy curve, everything we will discuss a few minutes with the examples. You can understood very easy way. So here potential energy student at starting nucleophile is taken and here alkyl halide is present. So this nucleophile is coming here, X minus remove here. So in this case nucleophile making a bond and halogen are breaking a bond, so partially negative and here partially negative, and after this nucleophile is attached with backside plus X minus. So this is potential energy curve student. So here what is this value? This value is EA. So in this case no intermediate is formed, that's why only one peak will be come. So here one peak will be come means this is one step reaction, no intermediate form, that's why here this reaction goes up to here and here. So from this one to this one, this is slowest step, and slowest step means this is rate determining step, because this is slowest step. Slowest step meaning student is that when nucleophile is strong, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस कार्बन की ओर तो हैलोजन निकलना चाहेगा, तो इसलिए ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे आपको समझ में आ गए होंगे कि कोई भी H और D की पोजीशन चेंज नहीं होती, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, केवल इन्वर्जन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा और इस तरीके से मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहुत ही बेसिक्स थी SN2 की। आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फैक्टर्स भी देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो SN2 को इफेक्ट करते हैं। वी विल डिस्कस, वेट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो SN2 रिएक्शन को फेवर्स करते हैं। Here degree of alkyl halide. So here student, if alkyl halide is less substituted means here steric hindered is less, so easily nucleophile approaches to make a bond. So that's why 1 degree carbon
alkyl halide is more red than 2 degree and then 3 degree. And here student 3 degree no SN2 because nucleophile not approach to this manner. That's why this hydrogen attached here, this hydrogen attached tetrahedrically, so not approach in come to on this carbon. That's why here no SN2. Okay. Next EWG, before we are discussed, EWG more means rate is high. अब ये एल्किल हैलाइड है, अगर मैंने बेटा यहाँ पर -I लगा दिया तो ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट मेरी बन रही थी, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते ही यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका रेट हाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये -I है, इसका -I मोर है और ये एल्कीन का -I लेस है, तो अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो -I जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सेम प्रॉपर्टीज हियर, दिस इज बेंजाइलिक alkyl halide and this is my strong nucleophile. Okay, and this nucleophile attack on here and this product is safe here. Student, Cl means here this is Cl, partially negative partially positive, that's why you can see here this is -I, so rate is high. Also in this case here -I group is attached, so here rate is high. Partially negative charge developed, transition state is more stabilized. In this case here this is benzylic and this is vinylic type. So here student, this chlorine liberate very easily, but this chlorine have a double bond character by the help of resonance. So here partially double bond character is present, so that's why this chlorine removal is very difficulty. If here we want to compare these two compounds, so which have more rate, this compound is more rate. If here student bridge head carbon any leaving group is present, so no SN1 and SN2, so please remember here, this is important point. If here we discuss like this, the rate of this molecule, because this is CO group is attached, is more than rate of like heteroatom molecule are present, then rate of benzylic, then rate of allylic, then normal alkyl group. So please remember this point. Now strong nucleophile, fourth one is strong nucleophile favors SN2. So first of all student, here we give you one point. Strong nucleophile means strong acid anion are weaker base. Okay, strong acid anion are weaker base and weaker base are good leaving group. Please remember, very important. If say for example we want to discuss ammonia and H2O, so this is strong base and this is weak base. So which is better nucleophile? Weaker base. So here if we are moving this direction, so leaving group availability is increases. Please remember, strong base we have discussed before. Strong base like SH minus, CN minus, I minus, OH minus. इंडिया सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करती है। इस तरीके से आप इस तरीकों को याद कर सकते हैं। बेटर लीविंग ग्रुप मैं बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन आर weaker base and weaker base are good leaving group. So here if HI strong acid HI HCl and here HBr and here HCl,
So this is strong acid because bond length is more. So this easily bond break. So its anion is Beker base, and Beker base are good leaving group. So what is order here? Br minus, and here Cl minus. So this is acidic order. What is acidic order? This is leaving group order. Strong acid anion Hi, HBr, HCl, because this bond length is more, this bond easily break. So H plus remove very easily, so acidic strength is increases. So this anion is Beker base, and Beker base are good leaving group. Next point, student, polar aprotic solvent. All are polar aprotic solvent, and this is my nucleophile, student. Sorry, this is my leaving group. So here in polar aprotic solvent, you can see in polar aprotic, student, anion is not solvated but cation is solvated. So anion is not solvated, meaning is here electron density is more, then electron density of the molecule is more or the atom is more, so nucleophilicity is increases. That's why we favor in SN2 reaction aprotic solvent we are taken. Reason is this. Okay, next, if we want to compare the rate, student, DMF, when this type of solvent occur, so you can see here, can DMF follow aprotic solvent? In aprotic solvent, SN2 reaction is favored. But if we want to discuss here, one time OH minus and this is SH minus. So which is strong nucleophile? This is aprotic solvent. This is this rate. This nucleophilicity is polar protic. But aprotic, student, which is better nucleophile, OH minus or SH minus? Please give me idea. OH minus or SH minus? So here, student, in OH minus and SH minus, which have more charge density, because oxygen molecule in a size small, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है सल्फर से, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ ले रहा हूँ, तो जिस पे साइज छोटा होगा क्या उस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको मैं कहता हूँ उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही अच्छी होती है. In polar aprotic solvent, in OH minus and HS minus, which have more nucleophile and which have more nucleophilicity? OH minus, because oxygen have a lesser size in sulfur. So here charge density more, then charge density more means nucleophilicity more. So if we compare first and second, which have more rate, so rate is first is more than second. So based upon in SN2, this is the complete theory, but I want to discuss about some problems, so please be focused on the problems. तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. उससे पहले आई विल गिव यू वन आइडिया. इन्वर्जन डेफिनेटली बट नो कमेंट ऑन कॉन्फिगरेशन. एट स्टार्टिंग हियर स्टूडेंट, दिस प्रॉब्लम वी आर टेकन. सो हियर इन बिटवीन टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैव गुड लिविंग ग्रुप. ऑब्वियसली क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप. सो दिस ग्रुप हियर and this Cl minus out. So here this compound is formed. But in this case, student, iodine is good leaving group. This SH minus come here and I2 out. Okay, so this is. So in first case, student, inversion definitely, but no comment on configuration. Product is inverted, but configuration, if this configuration is R, you can calculate this is R. So here this is also R. But in this case, student, if this is R and this is S.
या हम ये नहीं कह सकते कि इन्वर्जन हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा. इज डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन हियर. इफ R मीन्स हियर यू ऑल्सो seen here R, but here R means S. So no comment on configuration, but inversion definitely. This statement is true. So please remember here. Now in this case, student, if we want to calculate it about our rate, SN2 rate faster. In this case, this is 3 degree alkyl halide and this is 2 degree alkyl halide. Where rate more? SN2 2 degree. In this case, student, this is 2 degree alkyl halide and this is 1 degree alkyl halide. So here rate high, SN2. Next, this is benzylic and this is normal. So benzylic rate high. In this case, this is more substituted, but this is less substituted. So here this rate high. Now, next problem, decreasing order of SN2. Here, bromine. So decreasing order, this is 2 degree and this is 1 degree and this is 3 degree alkyl halide. So what is order? 1 degree is more than 2 degree than 3 degree. So B is greater than A is greater than C. Next problem. So this alkyl halide is 3 degree alkyl halide. Why 3 degree? Because this halogen is attached on 3 carbon directly, 1, 2 and 3. That's why this is 3 degree alkyl halide. So this is 3 degree. Here in this case this is 1 degree and here this is directly attached 1 and here 2 degree. So what is order here? If this is A, this is B and this is C. So here B greater than C greater than A. Understood? Any problem? Any problem, please ask. Next, if here student, you know very well, इस केस में this is by nucleophile, but here chlorine and bromine, which is better leaving group? In among chlorine and bromine, bromine is better leaving group, but in this case student, this bromine is double bonded, attached double bond character. So due to the resonance, this is strong bond. So leavability is decreases as compared to chlorine. That's why where my nucleophile attack? Here. So what is product? Very easily you can give me an idea. CH2SH and here Br as it is. Understood the concept? Next problem. In this case, this is my leaving group, but my nucleophile come on back side. So this is front side. So where my nucleophile come? In back side, and back side denoted by dash. That's why here this is 5-member ring CH3 and here in back side my Cn minus come. Now come, this is SH minus. Why this is all are SN2? Because what is solvent? DMF. Aprotic solvent favors a SN2 reaction. So here we are out, but where nucleophile come? Back side. So where nucleophile come on back side, so what is answer? Next student, this is my leaving group, so Cl out here, no configuration change here, that's why on this carbon no configuration because not removal anything. Now here SS. So this all theory about student here, because this is dash not, this is wedge type. Now correct. So student, this all theory about SN2, and based upon the concept we
डिस्कस्ड अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब कोई डाउट नहीं बचा होगा आपको। तो इस पे बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं SN2 मैकेनिज्म में, आप बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिए हुए फंडे पर आप सभी प्रॉब्लम्स नीट लेवल और IIT एडवांस लेवल की बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।